थी from everybody again. I mean same situation, India knocking down opponents left, right and center. साउथ अफ्रीका से रहन दो, ऑस्ट्रेलिया से रहन दो, किसी से भी रहन दो, इंडिया बैगन नहीं सुन रही किसकी भी. आई मीन आप इट्स ऑल आई थिंक स्टार्टेड फ्रॉम अल्टीमेटली. अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया तो प्रॉब्ली द ओनली मैच थोड़ा बहुत हक्का बक्का दिख रहे थे. दे डिडंट लुक लाइक इन द बेस्ट थिंग, बट देन विराट कोहली की जो जान बची उसके बाद थिंक अफगानिस्तान को डोमिनेट करे, पाकिस्तान को डोमिनेट करे, श्रीलंका को डोमिनेट कर दिए एंड या साउथ अफ्रीका को भी डोमिनेट कर दिए, न्यूजीलैंड को भी डोमिनेट कर दिया. आई थिंक फैंटास्टिक बॉलिंग जो तरीके से डाल रहे हैं अभी, नेक्स्ट लेवल बॉलिंग चल रही है इंडिया की. एंड आई थिंक वेल ऑन देयर वे, लाइक वेल ऑन देयर वे क्या, देयर ऑलरेडी इन द सेमीफाइनल्स. एंड आई थिंक विराट कोहली के जैसे कोई प्लेयर अभी आई डोंट थिंक इंडिया प्रोड्यूस कर पाएंगा. इट्स अ वेरी हार्ड यू नो स्टैंड, या जो बार सेट कर दिया उन्हें, स्टैंडर्ड जो सेट कर दिया विराट कोहली. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड या इट्स जस्ट बीन इनक्रेडिबल टू सी विराट कोहली ओवर द ईयर्स. अब लकी है कि भाई द वे वी got this kind of a batsman in our country, in our team, in this era. पोस्ट सचिन तेंदुलकर अपन सोचते थे कि कौन आने वाला है, क्या करने वाला है, बट यू नो वी नेवर फेल्ट. विराट कोहली इनिशियली ऐसा नहीं दिखता था, बट जब उन्हें ग्रो हुआ यार, जो उसका यू नो यू सीन हिम डेवलप एज अ प्लेयर, फैंटास्टिक. विराट कोहली की बात जितनी भी आप करो मैन, 49 ODI सेंचुरीज, आई थिंक रिमार्केबल अचीवमेंट. सचिन तेंदुलकर को निकाल लाइक यू नो पीछा करके अभी तो इक्वल है. एंड होपफुली एक आध दो और मैचेस में ही विल बी ऑन टॉप विद 50 एंड फैंटास्टिक अचीवमेंट. जडेजा आज उड़ गया. ये इंडियन बॉलिंग की अलग ही बात है यार, समझ के बाहर है कि भाई ये इंडियन बॉलिंग यूनिट कैसा इतना क्रेजी हो गए. यूजुअली बॉलिंग है समवेयर दैट अपन लैक करते हैं. जिस तरीके से यू नो टेल साफ करे, आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ इंडिया के लिए टेल वाइपिंग हो चुकी है. द वे दे आर नॉट यू नो टेल को और बैटिंग नहीं दे रहे, सबकी लग दे रहे. एंड या बिल्कुल मौत डाल दिए मैंने भाई. आई थिंक जडेजा जिस तरीके की बॉलिंग है, द मिनट ही गॉट स्टार्टेड टू टर्न द बॉल एवरीबॉडी न्यू कि जडेजा इज गोना बी द वन टू पिक अप द विकेट्स. कुलदीप भाई भी 2 उठा लिए, इकोनॉमिकल 6 रन 4 ओवर कुछ थे उनके, 2 उठा लिए एंड यू नो 2 इन हिज बकेट. शामी भाई अगेन दैट सीम एंड अ लिटिल बिट ऑफ निप एंड अगेन he's got 2 more wickets. फैंटास्टिक बॉलिंग यूनिट हो गई है इंडिया की. जसप्रीत बुमराह लीडिंग द वे अगेन. जिस तरीके की यू नो इकोनॉमिकल लाइन एंड लेंथ, ही सेट्स द टोन मैन. एंड सिराज फर्स्ट विकेट पिकअप करा विथ हिज इनिशियल कटर एंड देन द सुई मार दी सिराज भाई भी ईडन गार्डन्स में. आई मीन ईडन गार्डन जाने वाले थे हम लोग, बड़ा अच्छा ही हुआ कि नहीं गए इन अ वे. अगर हम लोग देख रहे हैं बिकॉज 83 ऑल आउट देखने उतनी दूर 15,000 20,000 रुपये डाल के नहीं जाने का यार. आई मीन नाउ इट्स ऑल अबाउट द सेमीज. वी कैन प्रॉब्ली रिलैक्स अ बिट. नेदरलैंड्स का मैच यस मैच है, रिस्पेक्ट है, सब है, बट थोड़ा बहुत लाइट ले सकते हैं. ऑलरेडी 12 को है, तो इंडिया हैव अ गुड वीक्स टाइम टू ऑफ एंड इट्स गोना बी फैंटास्टिक. सेमीफाइनल्स मैन अभी, और अभी से स्ट्रेस शुरू हो गया, अभी से टेंशन शुरू हो गया कि क्या होने वाला है. आई मीन यस अभी तक द बॉलिंग इज फैंटास्टिक, द बैटिंग इज फैंटास्टिक. रोहित शर्मा जो 40 मारा आज, फैंटास्टिक यू नो एग्रेसिव टेम्परामेंट से जो उन्हें सुकून में खेला. ही प्लेड हिज गेम. यस यू नो विकेट अनफॉर्चुनेट थी, लेकिन जिस तरीके से उन्हें स्टार्ट दिया आई थिंक दैट रियली गिव कॉन्फिडेंस. एंड देन विराट कोहली जो आके 10 बाउंड्रीज कुछ मारा, ही उन्हें अपना संभाल लिया, उन्हें समझ गया आई थिंक टेम्पलेट के कैसा खेलना है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप. श्रेयस अय्यर मैन, दिस गाय इज आल्सो नॉकिंग ऑन द डोर नाउ. इंजरी सस्टेन कर करके सबर कर करके जो तरीके से उन्हें खेल रहा है, इट विल नॉट जस्ट वानखेड़े में खेला. ही केम एंड यू नो आज भी प्रूव करा के ही कैन हिट अ फ्यू बाउंड्रीज, ही कैन हिट अ फ्यू सिक्सेस एंड इट्स जस्ट बीन इनसेन यार. लाइक जिस तरीके से श्रेयस अय्यर वापस आ रहा है सही टाइम पे. आप देखो जो रिसोर्सेज को बैक करा रोहित शर्मा, उसको यू नो देर पेइंग हिम डिविडेंड्स, देर पेइंग हिम रेम्यूनरेशन वापस मिल रहा उसको. केएल राहुल के साथ सबर करा, श्रेयस अय्यर के साथ सबर करा. इंजरी के बावजूद उन्हें उन लोगों को रखा. वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं हो रही थी जब तक केएल राहुल वापस नहीं आया, श्रेयस अय्यर आया. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल बोले संजू सैमसंग एंड इनू अरुणू, बट रोहित शर्मा एग्जैक्टली हिटिंग इट के भाई मैं जो लोगों को बैक करा वो लोग मेरे को यू नो वापस दे रहे अपना यू नो डिविडेंड या जो भी तरीके से मेरे को फ़ायदा है. और मैं जो देख के चला था, आई थिंक रोहित शर्मा को उस रिगार्ड्स में आप एज अ कैप्टन यू हैव टू कॉल इट आउट दैट ही हैड अ फैंटास्टिक आई टू सी द यू नो क्या बोल सकते हैं अपन कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी टू परफॉर्म. एंड आई थिंक जिस तरीके से श्रेयस अय्यर अब खेल रहा बैक टू बैक. नाउ द बिग थिंग इज कि भाई प्रेशर जब आएगा, जब सेमीफाइनल आएगा, हाउ इट्स गोना बी, डेफिनेटली विल बी डिफरेंट. बट नोइंग रोहित शर्मा मेंटालिटी एंड टेम्परामेंट जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से परसीव कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग जो मेरे को आई है रोहित शर्मा की, ही जस्ट टेक इट वन गेम एट टाइम. अभी भी उन्हें नेदरलैंड्स के गेम को ही टेक इट सीरियसली, ही वॉन्ट टेक इट लाइटली. ही ऑब्वियसली एनीवन विल वांट टू फिनिश यू नो ग्रुप स्टेजेस ऑन अ हाई नोट. एंड ग्रुप स्टेजेस को फिर अनडिफिटेड अनडिस्प्यूटेड जो भी आप बोलो, यू वुड वांट टू फिनिश दैट. सो आई एम प्रीटी श्योर रोहित शर्मा अभी सेमीफाइनल ना कोई टीम मेंबर सोच रहा होगा,
ना रोहित शर्मा सोच रहा होगा कि भाई फाइनल या सेमीफाइनल, one game at a time वैसे लेके चलो. I think that's going to be the tone of this whole Indian cricket team, that one game at a time and just hopefully baby steps into that semi-final and hopefully then into the final. But I mean, अगर बाकी के टेबल के हिसाब से देखें आप, this match doesn't really make a difference, but yes, we're table toppers, we're on the top of the table, we get first choice, 1-4 खेलेंगे. Fourth जो team आएगी, maybe it could be New Zealand, it could be Pakistan, it could be Afghanistan, it could be any of those teams till now. So that's there, that India at least know that coming into this semi-final, who probably will be their opposition probably in a couple of days. But yeah, when the pressure hits, then that's where we're going to assess the performance. अभी तक तो group stages चल रहे थे, अभी तक अभी तक आपकी जो टीम थी, it was playing fantastic cricket and still playing fantastic cricket. But the semi-final जब knockout की बारी आती, will we see certain people crack के, जब दाव पे रहता कि भाई नेक्स्ट गेम में फाइनल आते, थोड़े बहुत स्लिप्स, थोड़े बहुत मिसफील्ड्स जो आज अपन देखे सिराज भाई थोड़े बहुत करे, वो चीज़ डज इट गेट टू द फील्डर, विल इट गेट टू द, होपफुली नहीं रहेगा वो सिचुएशन. होपफुली वी विन दिस वर्ल्ड कप. आई डोंट वांट टू से इट अहेड टू फार एज वेल, बिकॉज धोनी मना करे अपने को पहले ओरियो बिस्किट खाते के नहीं नको बोलो कुछ भी. बट इट्स जस्ट गोइंग टू बी, अभी तक तो जिस तरीके का वर्ल्ड कप था, आई डोंट थिंक एनीवन एक्सपेक्टेड इंडिया टू परफॉर्म एट दिस लेवल, एट दिस डोमिनेंस जो अभी शुरू हुई है. एंड या, आई हैव अ वेरी हैप्पी कैंडिडेट विथ मी हु इज कमिंग राइट नाउ. Because South Africa was a team that we were looking forward to, but right now no one is a match for this Indian cricket team. Not a single one. They've dominated each and every, from Australia to South Africa to New Zealand. Everyone has lost against us. Yes, आप बोल सकते हैं कि भाई इधर कुछ खेलने के लिए नहीं था. Top of the table is not a very big thing. हाँ भाई आप anyway you're going to play one of the teams who win in the finals. But Mustafa bhai, we're in their semi-finals, man. We're locked and loaded on the top. Exactly what you wanted, right? अगर आप इंडियन फैन है या इंडियन टीम है, आपको ये होना था कि डोमिनेट एवरी सिंगल टीम, गो इनटू द सेमीफाइनल्स. मैं कल भी बोला था दैट लॉजिक ऑफ एक हारना ये वो सब बेकार के बात है. यू हैव टू डोमिनेट एवरी सिंगल टीम. यूर इन द वर्ल्ड कप. ये लाइक बायलैटरल सीरीज तो नहीं चल रही, बट दे ट्रीटिंग इट लाइक अ बायलैटरल. देयर इज नॉट दैट मच प्रेशर. दे प्लेइंग गुड क्रिकेट एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. आप हार गए सेमीफाइनल, फाइनल वो बाद में देखेंगे, नहीं मालूम है वो सब. आप यू हैव टू सी व्हाट इज हैंड यू. व्हाट्स नेक्स्ट? नेदरलैंड्स. यू बीट नेदरलैंड्स एंड यू गो. इफ आई एम कैप्टन, मैं versus Krishna Shala Thakur opening the bowling for me against Netherlands, but still, apart from that, like you can't really think too far ahead. You have to take it one game at a time, and you're doing the right thing. Everything. आप 300 रन से, अच्छा 240 सॉरी से जीते उन लोग. यही होना आपको, like you want to beat teams, you want to slap teams. They're slapping teams in the World Cup. So yes, I know. In the end of the day, if you don't get the trophy, everyone will get upset, but you can't think too far ahead. See. Get the trophy, chalo theek, that's still far-fetched, but no one in their right mindset would have thought India would have performed at this, given the context of this whole year of cricket जो India की थी. Injuries थे, KL Rahul को, Shreyas Iyer को, Hardik Pandya को, in the middle of the tournament Hardik Pandya को. So when you looked at this World Cup, coming into this World Cup, आप WTC final हार गए, आप Asia Cup जीत गए, but again, yeah, I mean that was also a very good performance. But now in this World Cup, with the people that were coming back into the squad, because वहाँ Asia Cup में आपके पास थोड़े और different लोग थे, बट ये हार्दिक और ये श्रेयस और ये KL आके कैसा डालेंगे, कौन क्या करेगा, शमी भाई, सिराज भाई, इन लोगों के बीच में कंपटीशन. But the way these boys have reached out to Rohit Sharma's plans, Rahul Dravid's plans, and you see a sync, you see this mentality of everyone having a backing for each other, everyone respecting everyone's opinion. जड्डू आज उड़ गए थे, उनके ऊपर काफ़ी था कि अरे यार ये बंदा नहीं डाल पा रहा, ये कर. बट आज जो तरीके से इवन लाइक केशव महाराज अच्छा डाले, but Jadeja got a fifer and that was just like. I think काफी लोग देख के पिच बोल रहे थे कि Jadeja लेंगा बोल के, because it's if there's any assistant, I think Harsha Bhogle said on commentary, if there's any assistant on the pitch, Jadeja will make you dance. Exactly आज ये हुआ. Bavuma, no foot movement on that ball, and then after that everyone got stuck on the crease, and it's exactly what Jadeja is. A very good captaincy from Rohit Sharma, उसको लेके आ गया 8वें 9वें ओवर में और फिर पूरा line खत्म कर दिया, and they finished the game. And Shami right now is the best bowler in the world, man. He's just too good, man. And this guy's clutch World Cup में आके ऐसा विकेट ले रहा, not playing like for a while, and he just comes in and seam position, I think Siraj said it, like he wakes up and he can bowl in the middle of the night with that seam position. So he's bowling exactly like $1 million right now. And if you're the Indian team, you're confident going into every single game. And if you're other teams, of course, semi-finals, you will look at the past, but this current Indian team is looking very lethal, man. Yeah, probably the best Indian team in a World Cup that you've seen, probably, like in terms of performance.
Yeah, I think domination wise everything. मतलब आप बोल सकते हैं कि lot of World Cup में group stage Yeah, Vinay mentioned 2003 में उसमें ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरा रहे थे ग्रुप स्टेज में, याद है आपको? But yes, they played really well in that. I think that was probably the second most dominant team. The 2011 तो they didn't dominate. Why I'm saying dominant is the bowling. The bowling has been ऐसे आप बोल सकते हैं आशीष नेहरा वहाँ पे डाला, ज़हीर खान थे, but ये तरीके से like डर है यार, like उनना first couple of 2-3 overs में तो wicket guarantee है आपको. सिराज, शामी और बुमराह, one of these guys will get you a wicket. The tail, I was mentioning the problem that we used to have in the past of not being able to wipe down tails. Now we're just running past them, like it's not like even they consider to us. So वो हिसाब से even with the batting depth, the quality of batting at the tail, we're still managing to wipe that out. That looks like a very big, you know, क्या बोले, अप्रिशिएट यही करना पड़ेगा कि एक लेवल अप हो गया इंडिया वो एस्पेक्ट में. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे पास वो ऑक्टोपस जुड़ गए. अब्दुल रहमान भाई जो बोले थे कल की लिख के ले लो, इंडिया सेम यहाँ लिखा हुआ है सेम 11 खेलेंगे और लिख के ले लो बोले. और कौन शम्सी खेलेगा. हाँ, और यांगसन को मार पड़ेगी भी बोले और क्या क्या की बोले. बट आई जस्ट टेक, डिड यू टेक एनी ऑफ द कमेंट्स? आई विल टेक ऑल द कमेंट्स. बिकू दीरू ड्योरी इंडिया बोल रहे, विनय सिंह मौत डाल रहे, चीखा मार रहे, रोहित तरुण भाई सिंह, रोहित गेटिंग ओवर aggressive, he has to stay for at least 25 overs in semi-finals and finals. No, I think he's right now in he likes to play with this temperament, and he said in the press conference, depending upon the situation I will change my role. I don't need to, I am the person who comes 0 for 0, there's less pressure on me, so I जितनी जल्दी मैं runs बनाऊंगा उतनी जल्दी प्लेटफॉर्म सेट करूंगा आगे के बैट्समैनों के लिए कि भाई आप खेल सकते हो या नहीं खेल सकते हो. अगर गिल विल आउट हो गया जैसे आप लखनऊ में देखिए, he changed his template. And also it's the personnel. Right now he knows his team, he knows he has Virat Kohli there and everything. अगर आप देखें साउथ अफ्रीका में Quinton de Kock is playing Rohit Sharma's template of 4 years ago, where he's taking his time and then he's accelerating. But you saw today when he tried doing that, if he got out, then it puts too much pressure on the middle order. Rohit Sharma is saying ki I'm going to go aggressive, and the 40 of 20 for me that was the game changing thing, because it allowed Kohli to take consume as many dot balls as he wanted and play. Of course Kohli played really well, but the pitch became slow and everything, so Rohit Sharma utilized that power play to perfection. And you have to play fearless cricket like that. I think there's no fear of losing. If you lose like that, I don't mind as a fan. I know nobody likes losing, you don't like losing, but I don't mind losing like that. If you're taking the attack to the opposite, अगर मैं लीडर हूँ और ऐसा aggressive खेल रहे बिना डर के इतना बड़ा गैम्बल लेके, I'm all for that. इसलिए भी मेरे को श्रेयस की इनिंग भी पसंद आया. जब देखो बिट्स में उन्हें एग्रेसिव था, बिट्स में उन्हें रोटेटिंग द स्ट्राइक, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट श्रेयस अय्यर को. उन्हें रोटेट द स्ट्राइक बहुत अच्छा करता. ही कीप्स द स्कोर बोर्ड टिकिंग. ही कंसिडर्ड एज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हाइल बैटिंग के लिए. प्रेशर बिल्ड करते रहते ऑपोजिशन की बॉलिंग पे. साउथ अफ्रीका के अगर अपन बॉलिंग देख रहे हैं यार, आज थोड़ी बहुत थकी हुई थी, बट केशव महाराज थोड़ा बहुत सताया आज कोहली को. इफ यू सी एंड बिट्स एंड थिंग्स लाइक Kohli was little bit struggling on the left arm spinner. Yeah, 100%, and the pitch was like that too. It was very difficult. एक पे तो out हो गया था, like, but he was confident in that. Yeah, he knew that कि like I hit the pad. But yeah, like honestly, and this is the first time in a while I've seen him play score 100 on a turning pitch. मेरे हिसाब से, I don't know what you guys think, but I haven't seen Kohli really score big runs on a turning pitch, and today it was a proper turning pitch. मतलब बॉल पलट रहा था from ball 1. महाराज का बॉल शुभमन गिल को अगर आप देखें, that was the perfect indicator, and that's the 9th-10th over. So I think the way he played today, this was for me was the best innings of the World Cup from Virat Kohli, because it was a challenging pitch more than anything else. Vinay Singh, next game next game. Are you playing Kishan, Ashwin and Krishna? I am playing them. Yeah, and I'm playing Thakur also. Yeah, I mean you would want to, but there's a week's gap, so I don't think I see any changes to. No, would you? He said. I would personally feel like maybe Siraj or one of these guys should sit down. But if I'm looking at from his angle, Rohit Sharma's angle, I don't think they're going to sit, because they have 1 week's break. They have time enough to recuperate and energize themselves back, and I think they'll have this like a practice match. Yeah, हम लोग भाई बोल रहे, मैंने कल बोला था रबाडा ट्रबल करेगा, बट गिल महाराज के बॉल पे आउट हो गया यार. I mean रबाडा जब आया था, things changed, right? Because India was flying. Rohit Sharma took them off to a great start. He was smashing the ball to all parts. फिर उसके बाद में रबाडा आया, he got some control, and then Maharaj as well. But I think the damage was done, and Ricky Ponting said it on air, if we get 300, the game is done, like bye-bye. He said it in the 30th over of India's batting. So like if, that guy has been playing, like he's the most successful captain in the world, so like if he's saying that, then we got to listen to him, and he got it exactly right. ये comment आप पढ़िए, हिंदी में है, मुझे sorry नहीं आता है. इंडिया का अग्नि परीक्षा सेमीफाइनल में होगा,
कौन कितना पानी में है पता चल जाएगा, अभी तुम लोग नहीं उड़ो। राज तिलक भाई कोई नहीं उड़ रहे भाई। अग्नि परीक्षा मतलब टेस्ट, लास्ट टेस्ट लाइक द एक्चुअल टेस्ट, द मेन टेस्ट। हाँ नहीं देखो वो मैं भी मानता हूँ, मगर उड़ना कोई पहले तो मगर उड़ रहे नहीं हम लोग आज इसलिए उड़ रहे क्योंकि ईडन गार्डन्स में बहुत छक्के उड़े। नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि उनका टेस्ट सेमीफाइनल में होगा। मैं तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं कि भाई सेमीफाइनल तक, तो फाइनल तक मुंह नहीं खोलना है, बट सेमीफाइनल अग्नि परीक्षा मगर आपको लिव इन द मोमेंट करना है। अगर आप इतना पेसिमिस्टिक रहेंगे तो फिर एंजॉय कहाँ से करेंगे? लाइक यू नो अभी फेस्टिव पीरियड है इंडिया में, एंजॉय करो मैच, जो जीत रहे मैचेस एंजॉय एंड ठीक है सेमीफाइनल में टेस्ट होगा, मगर व्हाट यू आर ये ले लो वीकली टेस्ट अभी पार हो गए, अभी प्री फाइनल आज था, अगली उसमें यू नो मेन फाइनल रहेगा और सेमीफाइनल भी लाइक। और देखो अगर इंडिया 2-3 मैच जीते हारे अगर ये ग्रुप स्टेजेस में, हम लोग यही बोलते थे कि भाई देयर इज वीकनेस, सेमीफाइनल में ऐसा खेले तो हार जाएंगे ये वो, मगर अभी अगर ऐसा खेले सेमीफाइनल में तो नहीं हारेंगे, वो तो गारंटी है। बिल्कुल आपकी बात सही है, अग्नि परीक्षा सेमीफाइनल है, सबको पता है, सब 2-3 साल से वही बोल रहे कि अग्नि परीक्षा 2015 में भी था, 19 में भी था, 23 में क्या होगा। बट आप 15 और 19 का परफॉर्मेंस ले, ये परफॉर्मेंस को कंपेयर करो आप, बॉलिंग इतनी खतरनाक जिंदगी में मैंने इंडिया की नहीं देखी है। और मैं लिख के रख ले रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह, सिराज और शामी जिस तरीके से डाल रहे हैं, आई हैव नॉट सीन अ बॉलिंग यूनिट फॉर इंडिया एवर परफॉर्म टू दिस consistency and also Jaddu in the mix, Kuldeep bhai in the mix, 5 solid bowlers wiping out every opposition right now. But अग्नि परीक्षा सेमीफाइनल है, सब लोग लिख के रख लो कि सेमीफाइनल अग्नि परीक्षा है, राज तिलक #। India looked invincible 2003 as well. However, will history repeat? I mean, in that one, Australia were way better in that tournament. They beat them twice, I think. Not way better, but they were just on another level. So I think थोड़ा अलग है. Our bowling is greater than our batting. But then we thought we would never say something like that because India's batting has always been dominant. I think the dressing room fun that India is doing is giving them the confidence in the games. Everyone is backing each other. Yeah, that's what you need to do to maintain a team, right? Unity, टुगेदरनेस, एक टीम कैसे अपने आप को अंडरस्टैंड करती व्हेन यू आर इन क्लोज क्वार्टर्स। जब आप क्लोज क्वार्टर्स में रहते हैं, क्या करीब रहते, ऑफिस में जैसे आप दोस्त बनाते, आप थोड़े बहुत टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते हो, और यही चीज़ है वो इंडिया जो अप्लाई कर रही है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कर रही, यूनिटी फॉर्म हो रही है। एग्जैक्टली फंटर आ गया। हम लोग तो मालूम है 10 बजे तुम बिजी हो जाएंगे, इसलिए अभी कर रहे हैं स्ट्रीम। फंटर आ गया, सॉरी आप बोल रहे थे। तो मैं ये बोल रहा था कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज यूनिटी बढ़ाती टीम में, और आप देख लो एवरीवन गॉट ईच अदर्स बैक, एवरीबॉडी इज रेडी टू प्ले। रोहित शर्मा हमारा कप्तान है, राहुल द्रविड़ हमारा कोच है, हम हमारे ये कंट्री के लिए जान देने रेडी हैं। इज व्हाट द आउटकम इज कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दीस एक्टिविटीज। मुस्तिफा एंड फैंस भाई, लॉर्ड टेम्पा इज द किंग। अमन खान बोल रहे, अमान खान सॉरी बोल रहे हैं, डियर आरिस क्यों वर्ल्ड कप में एक टीम को फेवर कर रहा है? कौन सी टीम को फेवर कर रहा है? पाकिस्तान को नहीं करा। इंडिया का तो जितने भी DRS है स्पॉट ऑन है। द वन डे टुक अगेंस्ट शामी दैट LBW वाज प्लम। द एम्पायर थॉट इट वाज गोइंग टू बी एन एज, इसलिए एम्पायर आई थिंक थोड़ा हेजिटेंट। तो इंडिया को क्यों फेवर कर रहा है? इंडिया को कहाँ फेवर कर रहा है भाई? एवरीथिंग इज ऑन ब्लैक एंड व्हाइट। DRS में वही तो है ना, फेवरिज्म की बात ही नहीं आती। आप देख लो, इट इज ब्लैक एंड ये मैं हमारे पड़ोसी दिख रहे हैं ऐसे कि बोलिंग पूरे 10 साल से पिटी है, सडन क्या हुआ हो गया जो दूसरी टीम इंडियन बॉलिंग नहीं खेल पा रही, ऐसा क्या हो गया? लेंथ साइड इंडियन बॉलर हिट कर रहे, बॉल द लेंथ जो इंडियन बॉलर हिट कर रहे कंसिस्टेंटली, और जो उन लोग की टीम पोजीशनिंग है, द स्ट्रेंथ ऑफ देयर रिस्ट एंड व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट वैरायटी। जसप्रीत बुमराह इज मोर एक्टिव, सिराज इज मोर कटर, Shami is more straight seam. Like you have all kind of varieties in that bowling, and you are not able to play any one of them because they're all hitting the correct lengths. भाई आप पूरा साल पिटरी बोल रही हैं मगर पूरा साल खेलते नहीं लोग एक साथ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया इज प्लेइंग ऑल 3 ऑफ द बेस्ट बॉलर्स टुगेदर इन अ प्रॉपर टूर्नामेंट स्ट्रिंग ऑफ गेम्स। आप जो बोल रहे हैं कि लाइक पिटरी है, वो दूसरे प्लेयर्स भी थे, उसमें अलग कॉम्बिनेशंस थे। ये जो 3 बॉलर है, इवन स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप इन लोग खेले नहीं साथ में। अभी 4-5 जो गेम है, सॉरी जो 4-5 गेम है, they're playing together, right? So the combination right now, this is the combination they're playing recently. जो आप बोल रहे पिटरी, ये वो अलग combination था, and Shami, Siraj and Bumrah for other different reasons, whether it's injury, whether it's combination, they didn't play together, but now they're playing together and they're playing class. बुमराह तो आयरलैंड में खेला,
शुरू साल में तो शिवम मावी और हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, लाइक आप लोग इकट्ठे अभी साथ में खेल रहे हैं, राइट? तो वो है, आप वो सब देखो पहले, लाइक आप जो आप अगर हिंट कर रहे हैं न्यू बॉल के बारे में अलग यूज कर रहे हैं, वो जो हसन रजा कमेंट कर रहे हैं, ये वो सब बहन के बात है। डोंट गेट इनटू ऑल दैट, बिकॉज मैं एक चीज बोलूं, दिस टूर्नामेंट्स इन इंडिया प्लेड वेरी बैड, जब नहीं उठाते सवाल, राइट? स्पेशली दूसरे कंट्रीज में नहीं उठाते कि भाई इंडिया ऐसा करी वैसा करी, बिकॉज दिस हंसते कि इंडिया प्लेइंग बैड। लुक, देयर आर क्वालिटी टीम, अदर टीम्स आर ऑल्सो क्वालिटी। जब अच्छा खेल रहे आपको तारीफ करना पड़ता, अगर जेलस हो के आप बोल रहे हैं ऐसा करे गड़बड़े वड़बड़े, तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन दैट, बिकॉज जब पाकिस्तान अच्छी खेलती है हम लोग दोनों बोलेंगे भाई जबरदस्त खेल रही, तारीफ तो करेंगे आपकी, लाइक देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। फखर जमान तो मेरा फेवरेट इनिंग थी वो, लाइक वर्ल्ड कप की जो मारा उन्होंने, बिकॉज 400 आप चेस कर रहे हैं एंड यू डाउन एंड आउट, तो हम लोग तारीफ करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे भाई पाकिस्तान को लेके आ रहे सेमीफाइनल में टीआरपी के लिए। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ना फैज बोल रहे। तो अगर जो आपके कमेंट्स है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि लाइक जो ऐसा नको सोचो, अगर अच्छी खेल रही टीम तारीफ करो, अगर बुरी करी क्रिटिसाइज करो, हेल्थी वर्जन डिबेट। हाँ, तो सी क्लास एंड डिसमिसल, सी क्लास एंड डिसमिसल, क्लास एंड डिसमिसल का सा था, एक बार चेक करो। उन्होंने जो वो करा वो एलबीडब्ल्यू सो हुआ पे डीआरएस हुआ था। हाँ अच्छा, वो जो विनय भाई भी बोल रहे थे। हाँ। विनय भाई आप उसका एनालिसिस दो भाई, विनय भाई बोलेंगे आपको एनालिसिस। सिराज अगर पिटा होता तो नंबर 1 ओडीआई बॉलर कैसा बनता भाई? वो 160 पर नहीं फेंक रहे, they're bowling just 135 to 140 and the length that they're hitting and the seam position, the other team भाई, मगर इन लोग लगातार तीनों साथ में बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे हैं। आपके पास एक पहले शार्दुल का कभी ओवर आता था पिट जाता था, अर्शदीप का ओवर आता था पिट जाता था, प्रसिद्ध कृष्णा का, यहाँ पे तीनों अभी प्रॉपर फॉर्म में है एंड फुली फिट है, तो दीज गाइस आर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स। अगर आप देखें, मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई जैसा नसीम शाहीन और उन लोग T20 वर्ल्ड कप में डाल रहे थे, अब हम थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई एकदम से कैसा डाल रहे 140 150, राइट? अभी देखो उन लोग की नहीं हो रही बोलिंग, इट्स नॉट बिकॉज दे आर यूजिंग डिफरेंट बॉल्स दिस एंड दैट, इज बिकॉज नसीम इज नॉट फिट एंड दे स्ट्रगलिंग इन दीज कंडीशंस, स्ट्रगलिंग इन दीज पिचेस। इंडिया आर आल्सो दे आर मोर फैमिलियर विद दीज कंडीशंस एंड दे आर फुली फिट। पॉइंट ऑफ फिटनेस मुस्तफा बोले, वर्कलोड मैनेजमेंट आप पाकिस्तान का देख लो, पाकिस्तान की पूरी टीम सेम टीम खेली थ्रू दिस ईयर। आप देख लो, नसीम को शोल्डर इंजरी रखते हुए उसको घस दिया है, शाहीन तो बेचारा अब खत्म ही हो गया, शादी के बाद भी इतना खिला रहे उसको, हारिस रऊफ को भी उतना पेल दिए। उसके बाद आप इंडिया का कोई ना कोई चेंज होते किस्मत में जसप्रीत बुमराह रिटर्न हमारे लिखा था, आ गया उन्हें इन आयरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज। सिराज तो नंबर 1 बॉलर था, ही इज बीन प्लेइंग द मोस्ट कंसिस्टेंट। शामी भाई को क्रिटिसाइज करे, हका ले, फिर वापस लाए। तो आप इंडिया का वर्कलोड मैनेजमेंट किस्मत में बोलो कुछ भी बोलो बेटर है राइट नाउ देन कंपेयरिंग इट टू पाकिस्तान और एनी अदर टीम, बिकॉज ऑल द अदर बॉलर्स इन दिस होल कंपटीशन आर प्रॉब्ली रन डाउन टू द वायर। अब मगर देखो, आई अंडरस्टैंड आपके राइवलरीज रहते, बैंटर रहता दोस्तों में ये वो, मगर जब दूसरा क्रिकेट हम लोग थोड़ी बोल रहे आके तारीफ करो ये वो, बट ऐसे एक्सक्यूजेस नको बनाओ कि भाई ये डाल दिया बॉल पे, ये कर दिया, वो कर दिया। बट डीआरएस इतना एविडेंट चीज है कि अगर कोई गलती हुआ भाई आजकल कोई नहीं बचते, लाइक सोशल मीडिया वुड हैव एक्सप्लोडेड। जब दूसरा मुल्क अच्छा खेलती है अप्रिशिएट करना पड़ता, हम लोग थोड़ी बोलेंगे भाई ऐसा वैसा। बांग्लादेश और श्रीलंका कल अच्छी खेले तो हम लोग वो भी बोलना पड़ता। अफगानिस्तान अच्छी खेल रही, क्रिकेट तो अच्छी खेल रही है, इट्स नॉट बिकॉज राशिद कुछ लाइक टेप लगा के बोल रहा है। जब बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप अहमदाबाद में भी मुस्तफा भाई, वी वर लाइक स्कैर्ड, आई वाज स्कैर्ड बिकॉज़ आई नो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एंड बट वो मैच में लकली हम लोग के बॉयज बेटर खेल गए। इन द नेक्स्ट मैच पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका से खेले, वी वर ऑन आवर फीट बिकॉज पाकिस्तान जिस तरीके से साउथ अफ्रीका से खेलो, एट द एंड ऑफ द डे को भाई क्रिकेट एंजॉय करो और क्रिकेट एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से देखना बेटर है। विनय सिंह, ईच गेम प्लेड एट अ डिफरेंट वेन्यू। India played each game at a different venue. But it didn't come to Hyderabad, that's sad. By the way, India is the only team to play in every single venue selected for the World Cup except for Hyderabad. Vinay, you forgot to say except for Hyderabad, buddy. वैसे भाई बात पाकिस्तान की नहीं है, उनका मसला अलग है। अगर इंडिया की रियली ऐसी बॉलिंग है, नेक्स्ट 5 ईयर इंडिया हर टूर्नामेंट हर सीरीज बट ये नेक्स्ट 5 ईयर खेलने ये टीम है ही नहीं। विराट कोहली प्रॉब्ली रिटायर हो, नहीं आप वो सब छोड़ो, आप 10 साल उठा लो, इंडिया का मेन प्रॉब्लम क्या, नॉकआउट में उन लोग चोक कर रहे हैं, मगर हर साल अपार्ट फ्रॉम 1 टूर्नामेंट और 2 टूर्नामेंट्स उन लोग सेमीफाइनल फाइनल पहुंच रहे बिकॉज उनकी बॉलिंग इंप्रूव हो गई। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन
बॉलिंग इंप्रूव हो गई उनकी, दे डूइंग वेल। ठीक है, तो फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ फखर जमान स्मैश्ड इट, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टीव स्मिथ स्मैश्ड इट, 2019 में बैटिंग नहीं चली, मगर उसमें भी अगर 2019 देखो वहां पे भी बॉलिंग अच्छी थी। कौन सी अच्छी बुरी बॉलिंग थी? सेमीफाइनल में भी बैटिंग की वजह से हारे थे, बॉलिंग की वजह से थोड़ी हारे थे। 230 को रिस्ट्रिक्ट कर आप न्यूजीलैंड को, वो चेस करना था स्कोर। सो बॉलिंग अच्छी थी इंडिया की जब भी, तो और वो भी इंग्लिश कंडीशन से, थोड़ी इंडियन कंडीशन से, वहां पे भी इंडिया टॉप करे टेबल, तो आप वो भी देखना चाहिए, राइट? लाइक सिर्फ इंडिया में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, देखो आप कंसिस्टेंटली देखो टूर्नामेंट्स में, नॉकआउट्स में आ रहे, नॉकआउट्स में नहीं आ रहे, नॉकआउट्स में आगे हारे वो अलग बात है, दे आर चोकिंग, दे आर मेकिंग मिस्टेक्स इन बिग नॉकआउट गेम्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर एंड इंडिविजुअल एरर्स। बुमराह जाके नो बॉल डाल दे रहा, ये कर दे रहा, वो कर दे रहा, बट in general they're doing well, the bowling is doing well. I think test matches maybe they're winning now away from home, not as much as I would like, and even tournaments mere hisab se they should have won much more with this attack. They should have much, yeah, they should have won much more. मगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बॉलिंग एकदम से अच्छी होगी, तो आप नहीं देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट 10 साल से। भाई वो बुमराह छुपावा था ना, हाँ बुमराह नहीं था 2 साल तो हमारे पास। उसमें अफगानिस्तान जीत भी सकती है साउथ अफ्रीका से। हाँ हाँ बिल्कुल, अफगानिस्तान जीत सकती है, ऑस्ट्रेलिया से भी जीत सकती है। भाई मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा गेम है वानखेड़े पे, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का। एंड अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका अगर सेटबैक दे दिए, मजा आ जाएगा भाई, टेबल में पूरा ऊपर नीचे कर देंगे एंड दे विल पंच वे अबव देयर वेट एंड दे हैव द क्वालिटी ऑफ बॉलर, जस्ट देयर बैटिंग अगर थोड़ा ऑन दैट डे जैसा अभी खेल रही लास्ट 2-3 मैचेस से, अगर अफगानिस्तान के प्लेयर ऐसा खेलते गए तो यू नेवर नो, दे माइट अपसेट 2 बिग टीम्स एंड इट विल बी फन टू सी दैट। मैं ऊपर के कमेंट्स मिस कर दिया, इंडिया में हिट द डेक वाले बॉलर कामयाब होते, ना कि 150 प्लस वाले। अगर बॉलिंग सही लेंथ पे नहीं है तो 150 की बॉल 230 प्लस की रफ्तार से बाहर जाती। बिल्कुल हम लोग कल यही बोल रहे थे कि इंडिया में ऐसा रुक के आता बॉल, यू हैव टू हिट द राइट लेंथ, टॉप ऑफ स्टंप, खींची हुई लेंथ जो है जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ और गुड लेंथ, वहाँ पे अगर आप डालें तो फिर आपको ज़्यादा फायदा है। अगर आप पे से आप फुल डालेंगे, शॉर्ट डालेंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं है स्ट्रिंग डाउन द लेग साइड, तो आप पिटने वाले हैं। तो दैट इज द थिंग एंड इट्स ऑल्सो दे आर एक्सपीरियंस इन दिस कंडीशन, दे नो एग्जैक्टली कहाँ आपको हिट करना है। अपार्ट फ्रॉम एन इंडियन बॉलर, अगर आप तो चलो इंडियन बॉलर का मिचेल स्टार्क जो कल डाले इंग्लैंड के अगेंस्ट, ही वाज बॉलिंग राइट लाइक गुड लेंथ एंड स्टफ एंड got 2 important breakthroughs for Australia. तो it's not कि भाई खाली इंडियन बॉलर सक्सेसफुल हो रहे इंडिया में, अगर ऐसा पॉइंट भी निकालना चाह रहे हो, it's not that fact. You got decent enough bowling. South Africa was bowling pretty well as well till like last game or 2 games before that. In Bangalore, Shaheen hit the deck very properly. So it's just a line and length, and हर press conference में हर captain का एक ही complain है कि the margin for errors for bowler is very less, which you have to deal with it. So I mean that's the conditions here, and you just have to hit the right lengths and not give too much width away. क्रीम लगा के दे रहे हैं बोले मोहम्मद आसम भाई ये पाकिस्तान के बेकार यूट्यूब क्रिकेटर्स और क्रिकेट प्लेयर्स बोल रहे कि इंडिया को बहुत दूसरे मिल रहे हैं। 170 for 0 इंडिया डिफेंड नहीं कर सकते बिकॉज बॉलिंग कंसर्न ये है। बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तान ने 152-0 किया था, तब भी बुमराह और शमी थे, जडेजा था, क्या हो गया? अगर आपको अनबॉक्स बनना है तो फिर आप बोल रहे हैं कि वो टूर्नामेंट में फिशी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज शाहीन इतना स्विंग कर रहा था, एलबीडब्ल्यू कर रहा था, दुबई के फ्लैट पिचेस पे एकदम से बॉल हिल रहा था, ये वो। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि एकदम से यहाँ पे हो गया, आप तब भी बोलो कि एकदम से शाहीन भी अलग क्रीम लगा रहा था, वो कर रहा था, तो फेयर रख होता ही बोल रहा हूँ मैं। अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे लगा रहे हैं जो भी न्यू बॉल यूज कर रहे हैं, आप वहाँ पे भी बोलो, मैं भी वही उल्टा बोल सकता हूँ। आप प्लेयर की काबिलियत और ये जो प्लेयर बनते हैं ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा उसको रिस्पेक्ट करो ना। लाइक आई मीन भाई फॉर्म रहता है, कभी नहीं चलता कभी। अब शाहीन पिट रहा 90 दे दिया 0, ऐसा नहीं है कि उन्हें अच्छा बॉलर नहीं है, अच्छा बॉलर है। हटा लो 90s में सबसे कामयाब फास्ट बॉलर्स कौन थे भाई? वकार भाई ना 90 ग्लेन मकरा, आई एम जस्ट सेइंग पाकिस्तान में से जा रहा हूं मैं। 99 का वर्ल्ड कप नहीं जीते, क्यों नहीं जीते? उनकी काबिलियत नहीं थी क्या, या क्रीम नहीं लगाए उस दिन? आप रिस्पेक्ट करो, थोड़ी होता भाई, लाइक रिस्पेक्ट द प्लेयर्स एंड आप जब अगर एंड देयर इज नॉट जस्ट लाइक जस्ट बिकॉज़ यू वन वर्ल्ड कप दैट मीन आपको प्रेशर नहीं आएगा। आप यू नो वर्ल्ड कप आप भाई जब 1 लाख 2 लाख लोग आपको देख रहे, दुनिया में देख रहे, कौन भी बंदा रहे तो कितनी भी बार ना, विराट कोहली इतने सेंचुरी मार चुका, अभी भी उन्हें 3 साल नहीं मारा, बीच में ड्रॉट था क्या उसका, वो है अब जो सेंचुरी मारा क्या बॉल बदल गया
बंदे की टैलेंट है, वो रिस्पेक्ट करो। ये सब बातों में जाके अपन अपनों में लड़ाइयाँ हो जाती है, weird topics है ये। एंड ऑफ द डे क्रिकेट है, देखो उसमें आप अगर एक्सक्यूजेस बनाएंगे ये करेंगे तो पर ऐसा थोड़ी चलेगा, बिकॉज पलटा के हम लोग यही बोलेंगे। आप जब हारोगे फिर हमें अब आप साउथ अफ्रीका से जीते, आप ऐसा कैसा एकदम से अच्छा खेलने लगा, वो क्वेश्चन करना, इट्स नॉट गोइंग, यू जस्ट रिस्पेक्ट द क्लास एंड क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स एंड द परफॉर्मेंस ऑन दैट डे, soaking in that pressure, that's about it. It's just about soaking in the pressure, the quality of cricket, dodginess, DRS एक साइड में दे रहे। आप नहीं बोल सकते कि भाई जब आपके बॉलर बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं कि दिस इज द वर्ल्ड क्लास बॉलर, दे कैन नॉट प्ले हिम, कमेंट्स आते थे ही इज वर्ल्ड क्लास, इज दिस एंड दैट, एंड तब हमारे प्लेयर्स अच्छा खेलते, उसके बाद या लाइक जो दूसरी टीम के अच्छे प्लेयर्स खेलते, फिर आप बोलेंगे कि भाई दूसरे बॉल यूज करें, ये कर, आपको हजम करना चाहिए बात कि भाई उन लोग भी अच्छा डाल रहे हैं, राइट, एंड इट्स अबाउट ऑफ फॉर्म एंड दिस इज एवरीथिंग। अभी आप देखो इंग्लैंड के जो क्रिकेट है, राइट, उन लोग बेकार खेल रहे हैं, दैट डजंट मीन देयर समथिंग फिशी, दे हैड अ गुड 5 year period and they're playing poor। साउथ अफ्रीका एंड दे कॉलिंग देमसेल्फ फॉर बेन स्टोक्स, बोला वी आर प्लेइंग क्रैप, यानी कि हम टट्टी खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका जो खेल रही है क्रिकेट, ठीक है, आज का मैच हटा दो, नीदरलैंड्स का मैच हटा दो, अदरवाइज दे डोमिनेटिंग टीम्स, दे किलिंग है, 400 मार रहे हैं। अब बोलना आके बोलो हसन रजा को कि भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो बॉल दूसरा बॉल यूज कर रहे, ओल्ड बॉल पुरानी बॉल यूज कर रहे, जब बोलना था, राइट, अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए आप पाकिस्तान, लेट्स से, आई एम नॉट, मेरे को तो बहुत पसंद है भाई क्रिकेट इन जनरल, बट अगर पहुंच गए तो हम बोलेंगे ये वाले मैच में अलग बॉल्स दिया, बोलने वाले सेमीफाइनल में पहुंचे फखर भाई जो मारे वो टेनिस बॉल यूज कर रहे थे, वैसे थोड़ी होता है, अच्छा क्रिकेट खेला इसलिए उनकी इंजरी थी, वो नहीं परफॉर्म करे थे एशिया कप से। ये बंदा श्रीलंका में देखा, मैं टीवी पे देखा, आगे को बंदा परफॉर्म नहीं करा, वो बंदा जाके बैंगलोर के यही मैच में क्यों मारा, फिर क्यों नहीं मारा? नहीं, मगर अगर आपकी थिंकिंग है तो आपके लॉजिक से उसने इसलिए मारा बिकॉज़ पाकिस्तान को लेके आना सेमीफाइनल में, बैट में स्प्रिंग था उनके, बिकॉज़ ऑफ टीवी एडवर्टाइजमेंट, राइट, एडवर्टाइजमेंट के लिए पाकिस्तान को लेके आना है, सो दैट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट, ऐसा थोड़ी होता है, लाइक इट्स पाकिस्तान प्लेड अमेजिंग क्रिकेट, दैट्स व्हाई दे वन चेसिंग 400। यहां बैठ के बोले फखर भाई के बैट में स्प्रिंग था, या फखर भाई बटन दबाए तो सिक्स चले आ रहा था, नहीं, उनकी काबिलियत, उनकी ताकत हम देखे भाई, आपको अप्रिशिएट करना पड़ता, आपको हजम करना पड़ता, अगर आपकी दुश्मन भी अगर अच्छा खेल रहे हैं आपको अप्रिशिएट करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे भाई क्रिकेट हम रिस्पेक्ट करते हैं, वी वॉच इट फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, वी डोंट वॉच इट थ्रू दिस होल रबिश दैट पीपल ट्राई टू पोर्ट्रे इट, एंड वही है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल क्या बोले एडमिरेशन के साथ देखिए और एंजॉय करिए यार, लाइक आपकी कंट्री की क्रिकेट। हम नसीम से माय गाय लाइक नसीम से बॉलिंग, मुस्तफा भाई नोज एवरीबडी हु टॉक्स टू मी, आई अप्रिशिएट हिज बॉलिंग, मुस्तफा एंजॉय शाहीन बॉलिंग, वी एंजॉय बाबर्स बैटिंग एट टाइम्स जब भी उन्हें करा, सो इट्स जस्ट अ मैटर कि भाई ऑन सर्टेन डेज पीपल आउट टू ईच अदर विद मेंटल एबिलिटी एज वेल, नॉट जस्ट कि भाई आप अच्छा खेले या बॉल अलग है या क्या है। खैर एनीवे, मुफ्ती भाई फैज भाई, इस हिसाब से तो अफगानिस्तान की बैटिंग इंडिया के बाद सबसे बेस्ट है, उन्हें 287 हाई स्कोर किया था हमारे खिलाफ। व्हाट डिड इंडिया, पंडित आसिंग, what India did today to South Africa, what is the best way for South Africa to get up and going from here, also how India can continue being this ruthless. I think the way South Africa recovered from the Netherlands game, that's exactly what they have to do. It's a very bad loss against an excellent team. That was more shocking. I think the Netherlands thing was probably hurting them more right now. They've qualified for the semi-finals. It's about now just preparing for that big game and working on chasing, I think. Whatever it is, whether it's team meetings, strategizing, game plans, jo bhi hai. Even Janssen looked pretty nervous today. He didn't, it was one of his worst spells because he wasn't controlling the ball. उन्हें जो 2-3 वाइड देखा था, 5 वाइड्स डाले यार and इतने बड़े वाइड्स डाल रहा था, तो I think it's about just strategizing how can we play while bowling first, what mistakes we're making, analyze those mistakes and try to get improvement. लेकिन I think they're capable of coming back. They'll come back with the response. Yeah, if they lost to Netherlands and come back like that, I think they can. But also I think for South Africa it's good, they've got a taste of what is to come in the semis or in the finals if they reach there, and South Africa now understand कि भाई ऐसा नहीं चल सकता. Maybe I think they'll try to formulate a different kind of a, not a template I'd say, like थोड़े बहुत adjustments करके. I know Markram also was very upset जब उन्हें out हुआ, उन्हें भी upset. तो I think थोड़ा बहुत understanding मिली from this Indian team कि ये लोग approach कैसा कर रहे game, they can take a few notes from there. Eden Gardens is one of the semi-final venues. If they get to play there, they've got an understanding of the pitch now. So there are a lot of positives that South Africa can take back, but a lot of negatives. The line and length, Lungi and Gidi, like horrendous bowling. उसके बाद आपके Janssen जो इतना अच्छा खेला था, बैटिंग वाज अबिस्मल. तो बहुत प्रॉब्लम्स है साउथ अफ्रीका में, बट आई थिंक कहीं ना कहीं they'll take a few क्या lot of notes in back to the dressing room, which will probably help them in the next जो भी पार in this क्या semi-finals है वो.
बात ये नहीं है, बात यह है कि एक टीम ऐसे डोमिनेट कर रही है और सडन 400 बनाने वाले 83 रह गई है। इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। आपको आर्ग्यूमेंट करना है तो कर ले भाई। मैं तो आर्ग्यूमेंट तो करूंगा बिकॉज मेरे को आपका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी जब 2003 में जीती थी उसमें भी इंडिया लाइक 300 मारे थे, 270 चेस करे थे वसीम अकरम वकार यूसुफ लोग के खिलाफ। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 120 ऑल आउट हो गए और फिर फाइनल में 350 खा लिए थे। इंग्लैंड को दे हैड देम 70 फॉर 8 मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दे कंसीडर 350। तो वो आर्गुमेंट बिकॉज यू आर प्लेइंग अ वर्ल्ड क्लास टीम। अब वही अमन भाई देखो अमान भाई सॉरी 2007 में नहीं मगर मैं यही बोल रहा हूँ आपको। इंडिया रनर अप आई थी 2007 में 2003 में 2007 में इंडिया को बांग्लादेश ग्रुप स्टेज में लात मार के निकाली थी। पॉइंट ये है कि भाई आप जो बोल रहे कि 400 का 83 अब ऐसा वेरिएशन दिख रहा कि बड़े बड़े टीम, बट आप बॉलिंग तो देखो एक बार। शमी भाई 3-4 मैच में यार 15 से 16 मगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर टीम ऐसी क्वालिटी खेल रही, सीन दिस बिफोर। आप 2003 उठा लो, आपको वो सब देखना भी नहीं है। 2003 में ऑस्ट्रेलिया कैसा हमारी इंडिया को 2 बार नंगा और इंडिया सबको टीवी बंद कर दिया भाई सचिन। इंडिया सबको धो रहे थे। आप ये भी बोलना था नेदरलैंड्स के खिलाफ कैसा हार गए साउथ अफ्रीका। आप इंडिया के सवाल, इंडिया के मैच में आप सवाल कर रहे हैं, आप दूसरे मैचेस में भी सवाल पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल जिम्बाब्वे से हार गया, वो नहीं बोल रहे, फिर वो लोग फाइनल में कैसा है। तो भाई देयर विल ऑलवेज गोइंग टू बी अ वे, इट इज अ टूर्नामेंट, दीस आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी टीम। ये हमारे थोड़ी कॉर्पोरेट लीग या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के बच्चे, बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट, इसलिए ऐसा सफर कर रहे हैं। लाइक राइट नाउ दे प्लेइंग हाई क्वालिटी क्रिकेट, दे जस्ट हैव टू अप्रिशिएट। दे विल आल्सो हैव अ बैड डे, उसमें भी उन लोग हार सकते हैं भाई। दे कैन आल्सो लूज टू पाकिस्तान, दे कैन आल्सो इंडिया से कैसे हारी फिर आप बोलो वो मैच। दे कैन आल्सो क्या लाइक आप थोड़ी वो बैठ के सोप देखेंगे, उसमें बुमराह नो बॉल दारा चैंपियंस ट्रॉफी, हम बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग बोले फकर सलमान का इनिंग जबरदस्त था। ऐसा थोड़ी होता है भैया। थोड़ा सा आपकी बात समझ सकता हूं मैं तो नहीं समझ सकता। आप कैसे समझ रहे हैं? आप मेरे को समझाओ कैसा समझ रहे हैं? नहीं उन्होंने जो तरीके से किराक हो जा रहे हो उस हिसाब से बोल रहा हूं, उनकी बात समझ रहा हूं। नहीं देखो मैं गुस्से में नहीं हूं, मगर उनको समझाना चाहिए भाई। आप भी, हम भी, रिस्पांसिबिलिटी है हमारा। एक लेंस से देख रहे हो, वो लेंस थोड़ा बहुत नॉट इन द राइट वे है वो बिकॉज़ इट्स नॉट अप्रिशिएटिंग क्रिकेट। देखो आप यही बोल रहे हैं कि भाई 2003 में ऐसा हुआ, 2003 में इंडिया फाइनल में आई, 2000 फाइनलिस्ट अगर आके ग्रुप स्टेज में आ रही तो हम भी बोल सकते हैं यू नो उसमें दाल में कुछ काला है। लेकिन नहीं भाई, हम लोग बेकार खेले। यू हैव टू एडमिट दैट यू सक एट सम टाइम्स एंड यू सक, दैट्स इट। यू हैव ऑल द टीम्स राइट नाउ आर स्कैर्ड ऑफ इंडिया। यू कैन सी द फियर मैन, यू नॉट हैव ऑर्डिनरी प्लेयर। विराट कोहली आप अगर बोल रहे कि ऑर्डिनरी प्लेयर है तो फिर आप गलत क्या क्रिकेट देख रहे हैं। रोहित शर्मा अगर आप देख रहे हैं, आप जो आल्सो बॉलिंग देख लो यार। जसप्रीत बुमराह 2 साल के ब्रेक के बाद आके अगर ऐसा डाला, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। यू कांट से कि भाई अलग क्रीम लगा रहे, मखमल के चप्पला हैं हाथों में, इन्हें बैगन के बात ना को। अप्रिशिएट द क्रिकेट, अप्रिशिएट द क्वालिटी जो हम करते हैं आपके अगेंस्ट है। कोई भी अगर टीम रही भाई, नंगा मारी हमारे को WTC में ऑस्ट्रेलिया नंगा, फिर भी हम क्या ये थोड़ी बोले कि नहीं टेस्ट क्रिकेट में हम 2 फाइनल आ रहे बैक टू बैक WTC के। ऐसा भी नहीं कि एक, और वो भी एक न्यूजीलैंड से आ रहे जो हाथ का मैच था हम लोग के, अगर आपको याद है भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हारे अपन WTC, वी शुड हैव वन दैट। बट वी आर नॉट सिटिंग एंड सेइंग केन विलियमसन के दाढ़ी में कुछ चिटान थे या कोई बैगन के। नहीं वही आपको, इसलिए हम लोग ज्यादा आपको टाइम दे रहे हैं आज, बिकॉज आपको समझना चाहिए यू हैव टू अप्रिशिएट गुड क्रिकेट। आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, ना दुश्मनी है ना कुछ भी है। असेसमेंट में देखते भाई क्रिकेट, वी डोंट लुक एट इट विद लाइक जस्ट कि भाई हम खाली इंडिया को नहीं। मैं देखो आप it's not that you can be biased, you can say by like I am biased towards certain players, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मगर आप क्रिकेट के अलावा बातें करेंगे तो फिर आपको समझाना हमारा ड्यूटी है। बिकॉज़ यू हैव टू नहीं है, डिस्कस कर रहे हैं आप, फिर एट द एंड ऑफ द डे आप अपना नजरिया रखना चाह रहे रखिए, बट वी रिस्पेक्ट लाइक क्रिकेट एट द एंड ऑफ इट ऑल। हाँ तो वर्ल्ड कप में सडन अलादीन का चिराग हाथ लग गया। इंडिया वर्ल्ड बेस्ट टीम, वाओ जस्ट अमेजिंग। अब अगर आप वर्ल्ड कप व्हाट डिड वी विन मुस्तफा? एशिया कप जीते, उधर हम आधे 4 टीम से तो खेल चुके थे, तो भाई हमारे को एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी। आप पूरा वर्कलोड मैनेज नहीं देखो अभी like he just it's okay like he's not understanding, we can't do anything about it, but you have to we listen, cricket is a sport। फैज भाई उनका ब्रेथ चले जा रहा है इसलिए मैं उनको काट रहा हूँ, because there is no point wasting time on this right now, but you have to relax भाई, एंजॉय करो क्रिकेट। आप स्टूपिड एक्सक्यूजेस बनाएंगे तो फिर यू विल सफर लाइक मेंटली, यू वोंट एंजॉय द गेम। एंजॉय, कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद इंडियन क्रिकेट, कोई बात, कौन बोल रहे हैं आपको जबरदस्ती इंडिया का फ्लैग लेके वो करो। आपको अगर आपको नहीं पसंद नहीं फैज मैं बोल रहा हूँ, नहीं इन 2 weeks टाइम लेट्स से खुदा ना का नहीं मैं बोल रहा हूँ फैज, आई एम फिनिशिंग इट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग 2 weeks टाइम में अगर इंडिया अल्लाह ना करे खुदा ना खासा नहीं जीती,
फिर आप आके ये चैनल पे बोलो कि भाई ये फिर क्या, दैट्स व्हाट इट इज, यू हैव टू वेट. वो तो नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे फिर भाई बोलेंगे, सब जाओ सही था, वापस, हम हाँ, गलत तब थे, नहीं सब. बोलेंगे. नहीं बट आप जस्ट एंजॉय करो खैर क्रिकेट. वो तेजल भाई तुम्हारे को लिंक बैगन तुम पूरा स्ट्रीम बने पर तो आया. मेरे हिसाब से जस्ट रिलैक्स, एंजॉय द क्रिकेट. अगर आपको हजम नहीं हो रहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ कर नहीं पूरी सकते, तरह मगर हमारा करो. ड्यूटी है समझाने के लिए भाई. जस्ट लाइक Enjoy the game, रिस्पेक्ट respect अदर everyone. ऑपोजिशंस, रिस्पेक्ट ऑपोजिशंस. Respect everyone, like your country, and enjoy the game. या रिस्पेक्ट एवरीबडी एंड एंजॉय द गेम. ठीक है, आपको नहीं पसंद एक टीम, मैं समझ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम. मगर आप एक्सक्यूजेस बनाएंगे तो फिर लोग हंसेंगे आप पे, राइट? वसीम अकरम के बारे में आप बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे. हमारा वो सब ड्यूटी नहीं है. हमारा ड्यूटी ये है कि भाई वॉच द गेम्स एंड गिव एनालिसिस. इट डजंट हैव टू बी फेयर व्हाटएवर, बट आप गेम के बारे में बात करो. आप ये सब बोल रहे नया बॉल वया बॉल. आई जस्ट जान हो गया बोल. आधा घंटे नहीं, तुम 1 घंटा बोले. अब मैं मैं बस समझा रहा हूँ. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आई विल फिनिश इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एंजॉय द गेम, रिलैक्स करो. एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो टू अप्रिशिएट इवन इफ इट्स अ टीम यू डोंट लाइक. बेस्ट दैट्स ऑफ व्हाट आई एम लक. सेइंग. ब्रदर तुम कहा था इंडिया में, हाँ ना, वी ऑल्सो डोमिनेट 2019 वर्ल्ड कप. यस, इसलिए इंडिया को सपोर्ट है ना, ज़्यादा क्राउड भी है नई टीम्स के लिए. What else is there? Sorry. I say lost this chase when Van der Dusen came out looking to block everything, and that cost him the big game as he put pressure on Bavuma. And yes, I think Quinton de Kock and Van der Dusen's approach today really cost them the game. If you see India's approach compared to this, it was very contrasting. And South Africa, this has been their template, but I think in a chase it gets them stuck because if they lose a wicket or two, it puts a lot of pressure in the middle order, and there's a certain pattern they're playing with. It's working while batting first, but it's getting a bit risky batting second. I still feel they have to take risks. There's, I think, a lot of and I think the way they played against Pakistan, even though they threw wickets in the end, that is the way to start. The way Markram batted, Quinton de Kock batted, I would prefer that kind of approach. Yeah, I think there's also a lot of responsibility towards Quinton, and Quinton agar nahi deliver kar, then Bavuma has to stand up, or maybe Bavuma sits down and probably you bring in that other guy. What's the guy? Reza Hendricks. Sky and Jadeja batted on a different pitch. Their contribution was vital. Yeah, Sky batted pretty decently as well, and Jadeja also काफी times उनका नहीं चल रहा था, but आज whatever 24 or something that he made, 34, 24, one of those two, but he batted. but bowling तो भाई जडेजा भाई की किराक थी. And Sky मैं बोल रहा हूँ सुबह उसको nets में जब देखा मैं, I'm always been impressed उन्हें जिस तरीके से he smashes it in the nets, like he looks like a different level in the nets, and commitment बहुत ज़बरदस्त उसका. And I think कहीं ना कहीं थोड़े और time में I think you will be able to see him, why people are waiting for him in the 50-over format, because he middles the ball, he is very good attacking, and yeah, I think वो हिसाब से you might see Sky a bit more through this ODI squad going into the future. Yeah, missed a few chairs. I don't know where they went, but this is not good. South Africa have no fans. South Africa, I mean, a lot of people came to see South Africa because of the quality of cricket, and ज़बरदस्त थे. Fans थे, I think थोड़े बहुत देखे मेरे को आज स्टेडियम में, whatever I was able to pick. But yeah, I mean देखिए भाई, at the end of the day South Africa के fans रहो नहीं रहो, they've been performing crazy, and it's not कि भाई fans नहीं होने की वजह से आप performance एकदम ढल गया. आप you smashed Australia, you smashed bigger teams, you smashed New Zealand as well. So I think वो हिसाब से अगर आप देखो, it's not probably that aspect. They were just not able to play the quality of spin, and we know that they have a problem with the spinners. So in general, I think South Africa were outdone today by a class Indian bowling attack again. अच्छे क्रिकेट को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वन साइडेड क्रिकेट से क्रिकेट का सत्यानाश हो गया जो हो रहा है. अप्रिशिएट आवर टीम इंडिया, बट मैं अंधभक्त नहीं हूँ. सिंपल, आई हैव माय ओन व्यू. ठीक है, we understand you have your no one is going to say anything to you about your view, Bhaijan, but that's the only thing is that appreciate good cricket. I'm glad आप appreciate करते good cricket. One sided affair is just because one team is probably dominating. That's also one angle to look at it, but over the end of things, by you are with your view and we are with our view, so yeah. Bro, you have bad records in England and Australia. If your World Cup was in Australia, India is knocked out on group stages. I mean, there was a World Cup in 2019 and 2015 in England and Australia, and India reached the semi-finals in both of them. So I don't think that's completely true. If New Zealand beat SL on Thursday, the situation will be that if Pakistan won first against England, they are eliminated from World Cup. मुझे टाइम मिला तो मैं रोज आपके लाइव में आऊँगा भाई. आइए भाई. Do you feel India should change the playing 11 against Netherlands or continue the momentum? I feel that they should change the playing 11. What about you? I feel they should, subject to like a few people, like probably Siraj should take a rest.
Shami if he wants to, or Bumrah at least. But again, like I said, like Rohit Sharma doesn't look like he couldn't change it. Noman bhai आपको सलाम बोल रहे Oh, सलाम Noman, you guys should make a counter video reply video to those Pakistan journalists saying DRS favoring India, ICC giving different ball to India, and they're also asking India to do doping test. I don't think like I can't take that seriously. If it was a serious matter, then I would make a video or anything like that. But and plus, I'm a very young guy, very inexperienced in the field. I'm learning, so I don't know. Maybe I will say something wrong. But in my opinion, like I can't take those statements seriously. If I'm not going to take those statements seriously, then there's no point having an argument. I'm just explaining our brother because he took time out to came to our channel and talk. I was just trying to explain to him that don't blame outside factors. This is when you don't have any evidence. Just appreciate the cricket. If you don't like one-sided games, that is your opinion. I'm not saying you have to enjoy one-sided games. I'm just saying don't make excuses which are not visible. That's all I'm saying. So that's why, and it was my duty because he came on our channel and he made that point. So I just wanted to explain to him because I've also made mistakes. I also make stupid comments and people explain to me that no, you're wrong. I think so. That's all I was saying. He can have an opinion. He doesn't like one-sided games. बोल दिया खत्म. अब मैं नहीं बोल रहा उस पे कुछ भी. Those who are commenting that World Cup fix, this is pure talent and hard work of Indian bowlers. Bumrah ने 1.5 years NCM में काम किया. Shami created pitches at his farm and was practicing since lockdown. Yeah. Siraj worked in COVID to get variation, wobble seam and all of this. Today you're seeing the result of that hard work and you just got to respect that hard work at the end of the day. But tomorrow any other players do it from any other team, we'll be seeing the same appreciation के गाने वही गाने वाले जो हमारी टीम के लिए कर रहे. It's just हमारी team at this point of time is outdoing opposition left, right and center. And like I said, the minute anything happens, खुदा ना 100 and 1,000 times खुदा ना खास्ता, people will come at us and we'll have to take it. But it's not going to say कि what they performed in this World Cup was short of a brilliant performance and dedication, hard work का पूरी मेहनत की वही जो भी आप बोले returns मिल रहे हैं. And you have to just understand that कि भाई right now India at a different level of cricket comparing it to any other team in the world. मुस्ती भाई आप सऊदी में रहते हो क्या? जिद्दा टीम आएगी आईपीएल में ऐसा बोल रहे ये लोग सऊदी अपनी टीम बनाने में. भाई मैं तो छोड़ दूंगा सनराइजर्स को सपोर्ट करने. I'm going to support only the Jeddah team because I was born there. तो अगर आगे आईपीएल that will be a dream come true for me because मैं जब वहाँ पे पैदा हुआ and stuff क्रिकेट उतना नहीं था वहाँ पे. it was all football. हम लोग जो भी स्मॉल सर्कल था फैमिली के और दोस्त स्कूल के जो दोस्त थे हम लोग क्रिकेट खेलते थे and it was a very small section of the city. अगर ऐसा आईपीएल आ गया तो हमारे लिए तो बहुत स्पेशली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी and I'm going to support that team only because I was born and brought up there and I have a very good connection. तो भाई क्रेजी रहेगा वहाँ पे and like I can only dream of even जो बात हो रही है that's also a big thing for me. Seeing Aramco and thing visit Saudi, it's good because they're taking interest in the game whatever it is. तो क्रेजी रहेगा. Yeah, माहौल तो ज़बरदस्त रहेगा. I'll really enjoy it man. We also dominated इसलिए इंडिया को सपोर्ट नहीं ज़्यादा कोई क्राउड है ना बाकी और टीम्स के लिए. हाँ वो तो है भाई मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो इंडिया में लोकल ज़्यादा है. लाइक अगर आप इंग्लैंड देखें वहाँ पे देयर इज़ मोर एनआरआई कम्युनिटी. ऑस्ट्रेलिया देयर इज एनआरआई कम्युनिटी एंड देन लाइक श्रीलंकन लॉट ऑफ इमिग्रेंट कम्युनिटी इन एवरी कंट्री. इंडिया में उतना नहीं है. सो दैट्स व्हाई यू सी क्राउड्स बीइंग डोमिनेटेड बाय इंडिया. बट इफ यू सी यस्टरडे द बैंगलोर मैच उसमें आप वीडियोस देख लो आप लाइव भी अगर मैच देख रहे थे आपको पता चल जाता. द डीजे वाज सेइंग बाबर एंड द क्राउड वाज शाउटिंग बाबर. सो देयर is support for other teams and everything. Of course, if you're playing in India, they're gonna support India. And like fortunately or unfortunately, they have the biggest population. So वैसा होगा. Like when the game is one-sided, don't you think a sixth bowler should get a chance to bowl a few overs to get in some match practice? I just wanted to see Virat Kohli bowl. I think. Yeah, I agree with that. Honestly, I don't think that's a bad shout. But I think Rohit Sharma just wants to maintain like that, like rhythm right now. He doesn't want to. Do any hanky-panky kuch bhi. He doesn't want to change the winning mantra, and I think I would sort of understand where he's coming from. And then वही होता ना अरे ये वो बेवकूफ़ी कर दिए उसको लाल के bowling मार दी उन्हें पड़ गया. अगर I mean it wouldn't have made a very big difference in this context of this game, but any other game में अगर उन्हें कुछ ऐसा करा जहाँ पे one-sided है और एकदम से कोई आके पिट गया. नहीं बट उसमें क्या शर्म की बात है. इट्स ओके लाइक पिट गया तो पिट गया. बट आई थिंक इट्स करेक्ट कि चांस देना चाहिए जस्ट टू हैव द ऑप्शन. देगा तो उसको दे दो. Specifically when Dravid says Sky can bowl for India and I've seen Sky actually bowl. I went to India like 6-7 net sessions
and I saw Sky bowl in every single one of them, and he's been practicing quite a bit. Like I'm talking about the last 2 months. Like in the last 2 months, he's been bowling. He's been bowling Sky regularly in the nets. Even Shreyas Iyer has been bowling in the nets. But they're all they are bowling. They're all trying. They're rolling the arm over. But again, पूरा 50 over का game नहीं हुआ. Maybe there's a spell they didn't want to break the rhythm of Shami and stuff. But yeah, I would have liked to see. फैज भाई, आप हैदराबाद को सपोर्ट करोगे पर आप तो केएल के फैन हो? नहीं भाई, केएल का फैन मैं केएल के अगेंस्ट था भाई. मैं तो बिफोर दिस एशिया कप के रिटर्न से पहले मैं काफ़ी केएल राहुल को क्रिटिसाइज करता था, बिकॉज आईपीएल में भी हमको फाइनल्स में देख चुका, सेमीफाइनल में देख चुका. ही प्रेशर में आके हक देते बोलते हमारे हैदराबाद में हक देते थे. T20 वर्ल्ड कप में भी आप देखो ना थोड़े बहुत स्ट्रेस थे. बट द मिनट व्हेन ही केम बैक टू द एशिया कप एंड मुस्तफा भाई से पूछ सकते, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर नॉट, आई टोल्ड हिम ही लुक्स डिफरेंट, फेशियली कॉन्फिडेंट, ज़्यादा दिख रहे. द वे ही इज कमिंग ऑन टू द बॉल एंड यू कुड क्लियरली सी अ डिफरेंस. आप बचने के लिए बोले, बचने के लिए नहीं, आपको अलग दिख के आता है. हैबत अली है तो दिख के आ जाता है, एंड वो हिसाब से केएल राइट नाउ स्टिल देयर. बट आई स्टिल हैव टू सी हिम इन अ प्रेशर मैच व्हिच we'll see in a few weeks. A couple of weeks maybe we'll see. But that applies to Kohli and Rohit also. I have not seen in semi-final, final. But like Kohli, he still has these number of chases that he'll run single-handedly. So I would still say that argument is there. But the argument that in a big game, we haven't really seen it, right? In a knockout semi-final. In a knockout semi-final maybe, but like KL Rahul again, he's won one single-handedly this year to Sri Lanka against slow करके momentum उन्होंने मारे थे. But KL Rahul, for the talent that he has, but for example that game against Australia, that game no list now with Virat Kohli, that was a very big pressure situation. Yeah, and KL Rahul came out, so that's what I'm saying. But again, like when the title's on the line, then it's different. So I think Rohit would maintain his 5 bowlers, especially after looking at how hungry the bowlers are to get into top 5 of the wicket lists. Yeah, but like I think you should still try and roll the arm over a other, especially when you're dominating this, so you have the option. The thing, एक और चीज अगर आप देखो, if you go before the World Cup, warm up नहीं हुआ इंडिया, maybe that would have been a good place for them to roll their arms over in a 50-over format, which India unfortunately though rain out हो गए थे उनके warm up matches Trivandrum and I think Guwahati थी. So maybe in those matches, the way this ship is sailing right now, no one will want to do more than anything. I think is they just don't want to get injured while bowling. I think that's the biggest problem. Because Virat Kohli का action में कभी भी गिर जा सकता, कुछ भी हो सकता. Rohit Sharma has a finger injury as well. I think that is the biggest problem. Iyer और Surya Kumar का I'm not sure क्या है, but उसका lower back issues है and everything. So I think the main reason they're not bowling is because they're scared they're going to get injured. It's not because they can't bowl or they don't want to bowl. उस हिसाब से that is the only reason I can think of, because of the injury list we've seen in the recent years and everything. तो वैसा scene है. But yeah, now going into the final week of the group stages, right? This is the final week because next Sunday is the last group stage game between India and Netherlands. There's a huge game, New Zealand versus Sri Lanka, that can keep Pakistan's hopes alive. And then you have Pakistan, England, Kolkata, वो भी बड़ा मैच है. There's also Afghanistan playing Australia and South Africa. So ये बहुत बड़ा week है. Looking forward to it. आपको कैसा लग रहा है ये हफ्ता और कौन दिख रहा है आपको क्या होने वाला? I don't think we can predict it. पहले तो भाई देखो, honestly अगर आप देखो, the World Cup has gone a bit quick this time. I mean हम लोग 5th I'm getting depressed now. 5th October को शुरू करे थे ये चीज, and technically September एक महीना हो गया आज. वार्म अप जुलाई तो है सितंबर 26 जब से तो देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं. 5th October to 5th November यूं भागा भाई हम लोग के लिए, and I think we did not expect, I personally, I don't know Mustafa, why we didn't expect India to perform at this level. I'm happy. The setbacks that we saw for certain teams like Australia in the first 2 losing, England the way they were, पाकिस्तान से काफ़ी उम्मीद थी मेरे को, but again पाकिस्तान का जो नसीम की इंजरी थी, I think that really mentally affected the team. And yes, World Cup has been coming into this week. ये हफ्ता अगर आप वर्ल्ड कप का देख लो यार, मज़ा आने वाला है. There's still 3 teams fighting for that 4th spot, right? 3rd and 4th, I think, if I'm not wrong. Australia, Pakistan, Afghanistan. So these 3 teams and New Zealand. So ये 4 team हैं अभी right now in the mix of things. और भाई it's just like a TV show. आप इतना patience रख के TV show week on week देखते या daily देखते हैं, and then आपको एक climax कब ख़त्म है, आपकी 19 नवंबर को क्लाइमैक्स आने वाली है, सीजन फिनाले आने वाले हैं, जो भी बोला अपन. अभी आपका एक कैरेक्टर मर गया जो इंग्लैंड है, और एक कैरेक्टर फिर बांग्लादेश गया, श्रीलंका फिर बीच में एकदम राइज हो जाता था, बट देन दे जस्ट लॉस्ट अ मैच बिफोर टू अफगानिस्तान. तो एंड अफगानिस्तान इज दैट गाय हु केम फ्रॉम नोवेयर. तो एक ब्यूटीफुल क्लाइमैक्स की तरफ अपन मूव कर रहे हैं. एंड अगर पाकिस्तान आ गई, इट विल बी लाइक अ शॉकर. Afghanistan comes in, it will be a bigger shocker, punching above their weight. So I think I'm very excited for this last week of the World Cup in particular. Yeah, 100%. Rohit again giving a fantastic start, and then Kohli balancing out has not yet been
both Rohit and Virat get out early. If that happens, do you think the others can control the game? Yeah, I think they can. Of course, like this is like a very hypothetical question. It's a possibility. Which can happen. But I think that they can, like. If you look at the Lucknow game, Rohit was there. I think that's one place I would say. But again, KL Rahul over this year, like Mustafa said, he's come in and balanced the act at certain times. Pakistan ke against आप देख लो, Rohit Sharma in the Asia Cup, Rohit Sharma, Virat Kohli दोनों out हो गए थे, right Mustafa? And then who came into the balance? It was KL Rahul, Shreyas Iyer, Hardik Pandya अब नहीं है. Maybe that's going to be a big miss. But I think we have enough arsenal in the team to sort of balance the act, right Mustafa? Yeah, I think there is enough players over there. अगर आप देखें बैटिंग लाइनअप, KL Rahul, Shreyas Iyer, Surya Kumar Yadav, Shubman Gill, these guys are quality enough to handle it. Yep. But and the main thing I think is Rohit Sharma, the way he's playing. I have heaps of praise for that because he's taking gambles right now. Yeah. And I really like that. So even if it doesn't work, I think there are players there who can back him up. But if he does click in a semi-final, आप उल्टा कर दो आप. Rohit Sharma also has missed out on a lot of hundreds in this World Cup. And if that 100 comes in the semi-final, then there's that game he's finishing it. Like I guarantee you. And he has the capability of getting a double 100 too. So my thing is, I'm looking at the other way, flipping it the other way and saying that he's actually not hit full tilt right now, Rohit Sharma. And if he does, with this strike rate, he's ending the game very, very quickly. So that's how I'm going to look at it. Yeah, coming to his point, I'd say we have enough firepower. Right no, but if you compare to 2019, right? 2019, उन्हें 5 मारा, शिखर धवन 3 मार दिया था शायद. विराट कोहली had 70s, 80s. वहाँ पे तो मिडिल ऑर्डर की टेस्ट ही नहीं हुई थी. They never got tested, and when they did get tested, they were struggling. I remember that West Indies game एकदम से धोनी आके स्लो कर दिया था. New Zealand game में भी problem हुआ था. There was quite a few games where it was just the top order hitting. But यहाँ पे it's not exactly like that. Yes, Virat Kohli is contributing in every game. Rohit Sharma is contributing in every game. But there is also other players contributing. It's not like उन लोग खामोश बैठे हुए हैं. It's not like only Rohit or Kohli. Like Shreyas is contributing, KL Rahul is contributing, Shubman Gill has contributed. So I think that is the positive if you look at it from the other way. Yeah, 100%. Sorry, I don't want to miss comments because मैं को तुमसे बोल देते. Brother Sarfaraz Ahmed, what do you think? He is next captain in all format. If Babar lose the next game and we still not qualified for the World Cup, Brother Sarfaraz better or Shaheen Afridi for next captain? So Sarfaraz I don't think will be the captain now because देखो भाई उन्हें फिर आएगा बीच में. मैं एक चीज बोलूंगा, I mean आपका opinion ये होगा, मैं जब तक उन्हें नॉकआउट नहीं हुआ मैं ये नहीं दूंगा जवाब because कितनी बार मैं बोला बाबर को निकालो, सब बोलते बाबर को निकालो. उसको सेमीफाइनल फाइनल में उन्हें अगर पहुंच गया तो फिर सब खामोश बैठा थे, कुछ सब पूछते बोलते. तो I think we can only discuss the options and everything after. There is a lot of options. There is Shaheen there is Sarfaraz, Rizwan. The thing is, if Sarfaraz comes you're getting him basis on his history. Merit, yeah. And also like what he's doing in domestic, which is not a wrong thing. But then people who are in the current team are saying, "Bhai, in team mein nahi tha ye wo to." Like we'll discuss all that. I mean, I think there is arguments on both sides. But there is no point. What if Babar Azam wins the World Cup in the Narendra Modi Stadium? Then he's not going to lose captaincy for the next 20 years. He'll play until he's 50. He'll run out to be the prime minister. Yeah, so like we'll only can. I don't know. Faiz will have a different opinion. मेरा opinion नहीं. मैं खाली जवाब दे सकता हूँ after the. I'm not saying anything. बाबर को हटाओ. मैं तो बाबर के favor में हूँ भाई बाबर. तो फिर so that means. I'm just saying based अगर सरफराज को लाने की बात है समझा मैं कि भाई उन्होंने भाई बोले अगर सरफराज आ गया तो would that be a good call? तो मैं अगर वो सिर्फ सरफराज के पॉइंट में with all due respect to Babar and what keeping Babar here, but just based on sir, I won't say सरफराज को लेना because देखो भाई सरफराज में कितने साल बाकी है. If you want to start a नया Pakistan regiment, it should be under a younger captain, a younger person with a better mindset. And I think Shaheen would be a very good captain. Shaheen को like the way he reads the game PSL में, I know Rizwan भी जीत के, but I just feel Shaheen right now, the age that he has a lot of maturity in him, and अगर उन्हें बैटिंग करना शुरू कर दिया then perfect रह जाएगा उन्हें. What if you make Chachu captain? Chachu again वही 2-3 साल के वही Chachu. Fakhar can be, but injury थोड़ी बहुत problems है उसको. Mickey Arthur is the best choice for Pakistan or Mickey Arthur is good choice for Sri Lanka? Mickey Arthur is
wrong call, man. That happened, and we can get into that. Like उसको बहुत मसले यार, वो ना उन्हें पाकिस्तान में आके रहना चाह रहा, उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहा, उन्हें स्काइप पे कॉल लेके कोचिंग करना चाह रहा. That's not the way the coach is supposed to be. The coach has to stay with the team, and it'll make a very big difference. अगर वो पाकिस्तान आना शुरू करा, बच्चों को देखा कि कौन किधर है, स्ट्रीमलाइन करना है, वो पूरा कायदे आज़म कहाँ से प्लेयर उठा रहे, कैसा प्लेयर उठा रहे, कोई भी आके टीम में घुस जा रहा, वो पहले तो वो स्ट्रीमलाइन करो, आपकी पूरा लोकल क्रिकेट स्ट्रीमलाइन करो, सिलेक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करो, फिर आपको उभर के आएंगे, बैटर भी आएंगे, आपको बॉलर भी आएंगे. लेकिन अगर आप जब तक ऐसा चलते रहेगा कि कोई से भी जगह से कोई गली में 150 का बच्चा दिख गया, आप उसको उठा के ला लिए, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. They have to come through the process, I think. Bro, how are you looking Pakistan versus India semi-final Eden Garden? That is my dream. That's my dream. Like heart attack. I would love that. Like मेरे हिसाब से like people like Ferraris, people like nice T-shirts. This for me this is my brand, man. India, Pakistan, Kolkata, Eden Gardens. I don't think I can ask for something better than that. Yeah. I think no one can. Maybe you can say India, Pakistan, Birmingham semi-final. That's something I would maybe that would, because वहाँ पे the fans will be split also. So that is one thing I would say. But yeah, Eden Gardens, India, Pakistan. So I'm looking at that as in a very excited. Dubai में भी मजा आता था, but again flat Dubai में भी मजा आता, but like that for me, like in this World Cup, अगर आप देखें मेरे लिए तो dream match होगा भाई. 2019 Rohit or 2023 Kohli? That's a very tough question. But I'll go with I'll change this answer after. But right now I'll go with You go with Rohit? Man, is very tough actually. I have to think about it. I was going to say Rohit, but it's very tough. The context of the match is Virat is taking the You're dividing India right now with this question. No, I'm joking. But like, Ibrahim, it's a good question. It's very tough for me to answer. It's a very tough question. I think I'll do more research on Ibrahim bhai, 2023 Bahuma or 2023 Ilza Hendricks? ये बोला आप मेरे को. I mean, Ilza Hendricks should come back. He was playing fantastic cricket, and Bahuma is not giving aggressive starts here. I think Bahuma is struggling. He's not able to get runs under his belt, and it's been a very big issue. I think he's becoming a bit of a problem. Though he's the captain, I respect him for what he's done for South Africa, but he right now looks like the problem in that top order. बहुत important information आया है अभी स्पोर्टी इंडिया क्लब से. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्फिडेंस. मुस्ती भाई, कल आप पूछ रहे थे ना कनाडा T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं. मैंने चेक किया, कनाडा हैज ऑलरेडी बीन क्वालिफाइड. अरे मुबारक भाई. दिस बहुत खुशी की बात है. आई एम सो हैप्पी एज अ कैनेडियन सिटीजन. इट्स एन ऑनर टू सी माय कंट्री, द नेशन, माय कंट्री आल्सो माय कंट्री आल्सो to play a T20 World Cup. And yeah man, oh Canada. That's exciting news. And my other friends punter, these guys actually know the players more than me. I don't know all of them. I've met a few players. I played against some of the players. To see them play in a World Cup, that would be huge as well. So I think ज़्यादा दोस्ती कर लेंगे अब जाके. But I played against one or two. And it'll be good. Like you've seen them in real life. आप उन लोगों के साथ cricket खेल रहे हैं. Now they're gonna play against Virat Kohli. That will be next level. That's it for them as well. And वही Netherlands की story याद आ रही कि भाई some of their players were also working hard during COVID. ये वो लोग की jobs नहीं थे, Uber चला रहे थे. आज ये लोग भी World Cup खेल रहे हैं. जो तरीके से ना खेल रहे, I think fantastic shot for Netherlands. Yeah. I mean, it'll be good. And 20 teams से शायद वो World Cup. So it's gonna be a long World Cup, bro. T20, but it'll be a 1 month. It depends on how they split it. 1.5 T20 का. बहुत ज़्यादा. America and the West Indies. Yeah, I think. You have any other final thoughts or anything you guys? Final thoughts. कल तो बांग्लादेश श्रीलंका है. दोनों pollution में खेलने वाले हैं. वो देखना पड़ेगा. कल फर्क नहीं पड़ता. मैच देखना है. कल ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. छुट्टी ले रहे हैं आप? देखेंगे. आप अगर दे दिए तो देखेंगे. And नहीं, we will definitely come and try and do the review and stuff. But कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. इतना फर्क नहीं पड़ा कि दोनों प्रैक्टिस सेशन कैंसिल कर दिए पोल्यूशन की वजह से. दिल्ली में मैच है. दिल्ली में मैच. आज भी मेरे को पोल्यूशन दिख रहा था. हाँ, दिल्ली में या यहाँ पे? कलकत्ता में है काफ़ी उन लोगों का है स्मोक इश्यूज एंड पोल्यूशन इश्यूज. बट दिस इज बिकमिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम इंडिया में. मेजरली मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में यू डू सी पोल्यूशन के लेवल जो आप अगर न्यूज़ पे कभी देखे, दे डू सेट इट आउट. एंड अलार्मिंग है राइट नाउ बिकॉज इट्स ऑल्सो जैसे रोहित शर्मा बोले, ही स्पीक्स अ लॉट अबाउट इट outside the world of cricket कि भाई pollution थोड़ा control करना चाहिए. and the level of cars that I saw in Mumbai as well was like next level गाड़ियाँ हैं. I think हर घर पे 4-5 गाड़ियाँ हैं, 3-4 गाड़ियाँ हैं. तो जब तक गाड़ी कम नहीं होंगी, ट्रैफिक कम नहीं होंगी, मेट्रो यूज़ करो. And whatever we can
try and do. But I think कल का तो match, yeah, it definitely make a difference. The match is right now. The next match probably is Afghanistan and Australia that we'll have to wait Which for. is Tuesday. I think so. Sorry, Noman bhai ka hai about Pakistan. Remember the Champions Trophy, one change they brought in Fakhar Zaman and they won the trophy. Similar thing, can they repeat too? They can. I mean, they have the chance to come back into the semi-final, subject to beating England. And England is down and out right now. But England is such a team that on their day they can smash anyone. So that'll be fun to watch. And then New Zealand with Sri Lanka, if they manage to do something there, Rachin Ravindra, fantastic form of his life. First World Cup, and he doesn't look like it's his first. He's just really like bamboozled me like the way he's playing cricket. उन्हें तो जबरदस्त खेल रचिन रविंद्र is outstanding man. For me, he's the player of the tournament so far because no one expected him to come and score runs और उन्हें जो आसानी से खेल रहा and maturity के साथ खेल रहा, hats off to him. I really like his shot selection as well. Yesterday I noticed that he plays on the merit of the ball. He has a very good cut shot on him, a good pull shot on him. He can play straight down the ground as well. He has a variety. He accelerates also. Yeah, and look, every player will have dip in form and everything like that. But if he's playing like that in his first World Cup and with very little international cricket under his belt, I think then hats off to him. Yeah. Bro, Quaid-e-Azam Trophy, no match play live on PCB official page. All was that the stream was not on your country, and Quaid-e-Azam Trophy and Pakistan Cup is for now overseas Pakistan and no live. Sorry, again? No, मेरे को पूरा समझ में नहीं आया मगर I think वो बोल रहे थे कि Quaid-e-Azam में वो broadcast नहीं हो रहा है शायद या यहाँ पे नहीं हो रहा या पाकिस्तान में नहीं हो रहा, I don't know क्या live तो नहीं हो रहा but उन्होंने फिर what was the other one from outside Pakistan, the national? I don't understand the comment मगर but the way India's now I understand the second comment, the way India support the domestic like Ranji Trophy and one day domestic and they stream every match, this is a good thing. Youngsters for learning something. बहुत सही बात बोले आप भाई. Old is gold, बहुत बेहतरीन बात आप बोले. I think that is changed because Ranji Trophy मैं 8 साल से because मैं इंडिया बीच में आया नहीं काफ़ी सालों से, but I remember when I came in 2016 जब रांची ट्रॉफी स्टार स्पोर्ट्स पे दिखा रहे थे और मैं भी देख रहा था एंड उसके बाद में हॉटस्टार पे कनाडा में जब था या जहाँ भी था मैं देखता था रांची ट्रॉफी एंड it's really good for the cricketers because they're also getting paid well because of the broadcasting rights and we also can understand and everything. हमारे लिए अच्छा है but more it's good for them. They're getting exposure, they're getting paid properly and it's a proper tournament with the coverage is very important because it gives even scouts an understanding also. आप बैठ के आप बोल सकते हैं भाई ये player pick करना चाहिए. Maybe you're friends with somebody who's influential. Then they will go and look at their player, whatever it is. So I think that is a very good point आप जो बोले. ये मेरे लिए like when I scouted that guy in ILT20, I forgot the guy's name. ILT20 में गोरा Cadmore. हाँ yeah, like that. Like if you have broadcast for domestic games, not only does it make the players feel more important and it gives them a good pay day. अभी नसीम का भाई मुस्तफा भाई बोल रहे थे मुस्तफा भाई भी अच्छा है. मगर वही है कि हम लोग वो क्लिप्स में देख रहे हैं उन्होंने पूरा मैच दिखा और that will also help them earn money too, right? So I think that is a very good shout. But I think that pretty much wraps it up. कल फिर जुड़ेंगे आप लोगों के साथ. बांग्लादेश श्रीलंका का मैच है, रोज मैचेस है. ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है. We'll do कल के बाद से कल we'll discuss like the route to the semi-final for the other things. We'll calculate and everything. अभी Don को भी भेजना है video if he's watching, please भेज दो. So we'll look at the route. We'll calculate everybody's route. We'll discuss with everyone who they think will make the semi-finals. The only route that's going back is Joe route. Yeah, and we will preview the last week I think tomorrow, and we can review whatever we've seen today. So time fly हो गया and ये Sunday Netherlands India के बाद then it's just going to be anxiety के भाई we'll come to know कि कौन है semi-finalist, कौन से ग्राउंड में कौन खेल रहा, फ्लाइट की टिकट बुक करना है, टिकट्स मिलना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है फिर 19 तक. बट या till then जुड़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and happy birthday again to the king man. 49th ODI century. Fantastic achievement. And everybody, thank you so much for watching. Thank you.